behalf of Youth General Assembly. First of all, I am going to introduce you what is Beyond the Youth. Beyond the Youth is designed to meet the needs of policymakers, public speaking, and strategy. Am I audible now? Yes, you are now. First of all, I am going to introduce you what is Beyond the Youth. Beyond the Youth is actually designed to meet the needs of policymakers, public speaking, and strategy makers to show their potential and leadership qualities. Beyond the Youth has a very unique forum for youth to voice their concerns without the fear of being judged. And no idea is a bad idea policy is implemented to promote the involvement of youth in conference. Today is 12th of August. As we all know, this day is celebrated as International Youth Day. The main purpose to celebrate this day is to bring all the cultural and legal issues of the youth surrounding there, to bring them out to the higher authorities. As Iqbal said, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाती चलती हूँ। मेरे साथ मौजूद है मिस फ़रूख अवैस, फॉर्मर मेंबर है नेशनल यूथ काउंसिल की। मैम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपको वेलकम करते हैं हम। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है मिस हमदा अली खान, अलिफ से इंसानियत की रिप्रेजेंटेटर है। मिस, बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम करते हैं आपको पैनल पे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है मिस हानिया रिफत। हानिया रिफत रिप्रेजेंटेटर हैं वाईजीए की, और सर नजमुद्दीन फाउंडर हैं गेम्स ऑफ लॉ के। सर, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मिस फ़रूख अवैस, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। Miss Farouk, we cannot hear you. You're on mute. So we can't hear you still. Sorry मिस, we can't hear you. Maybe you could try without the headphones. Am I audible now? Yes, ma'am, you you are. are. Okay. So, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. My name is Farooq Awais. I'm a young leader at Pakistan Girl Guides Association. I'm a former member of Prime Minister's National Youth Council. I'm bilingual orator and adjudicator, currently serving as an educationist and a certified teacher trainer with the government of Azad Jammu and Kashmir. My work area focuses on education, human rights, youth engagement, and representation. I congratulate Youth General Assembly for their 6th Beyond Youth conference. Thank you for having me. Thank you, ma'am. Miss Hamda Ali Khan, coming to you with the same question. Ma'am, we can't hear you, sorry. सॉरी मैम, आपका इंटरनेट इशू कर रहा है। इसी के साथ हम चलते हैं हानिया रिफत की जानब। मैम, आप इंट्रोड्यूस करवाइएगा, तब तक मैम हम ना अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज देख लेती हैं। Firstly, Nimra, thank you so much for having me. I hope I'm audible and there's no distortion on my side. Okay, so Yes. I think I will begin by offering my felicitations to the entire youth of our country, of the world in general, क्योंकि आज हम International Youth Day celebrate कर रहे हैं, which is dedicated to celebrating youth initiatives. So this day is dedicated to Mr. Najm being the founder of Games of Law,
This day is dedicated to Hamda, who dropped out and is leading Alif Said Saniyat. This day is dedicated to all those young leaders who've taken initiatives and are moving forward with great vision. I am Hania Rifat. I am currently the Vice President of the Lahore chapter of the Youth General Assembly. And as we all are aware, Youth General Assembly is dedicated and committed towards providing a credible platform to the youth of the country so that they could come together and there could be direct consultation on policy and strategy matters. So we work on enhancing and harnessing the potential of the youth. So that's pretty much from my side. And I hope that we can have a very fruitful and amazing conversation with all the panelists today. Sure, thank you. Sir Najamuddin, coming to you. Sorry, sir, we can't hear you. Miss Hamda Ali Khan, now you can speak, Miss Hamda Ali Khan. Hamda, I'm sorry, there's some distortion on your side. Your voice cannot be heard properly, although there's some vibration that actually tells us that you are speaking, but we can't hear you. So maybe you could reconnect with a different connection or maybe a different device. कमिंग टू यू मिस फ़रूख अवैस, सब जानते हैं आज 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये YGA की तरफ से बियॉन्ड द यूथ का ये सेशन स्पेशली इनको डेडिकेट किया जा रहा है यूथ के लिए। मैम फ़रूख, आप इस बारे में बताइएगा कि हम ये बात करते हैं कि हमारी जो यूथ है हमारा वो बहुत बड़ा एसेट है और इसी एसेट को अगर हम लीडरशिप की तरफ लेके आना चाहें तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपके रिव्यूज़ चाहूँगी इसके बारे में। Sorry, ma'am. You also have internet connectivity issue. Hania, coming to you with the same question. Thank you, Nimra. Actually, I would begin by indicating towards a recent survey that was carried out by UNDP, that is United Nations Development Program. और उन्होंने अपने सर्वे के अंदर एक बड़ा अच्छा इंकशाफ किया कि एक बात तो we all aware of the fact that 63 to 64% of our population is currently being categorized as young. They fall within the bracket of the youth. इसके अंदर जो हमारी productive age है वो है 15 से 29 साल और इसके अंदर 29% of our population falls within this bracket. We need to appreciate the fact that we are undergoing a demographic transition जिसके अंदर हमारी youth की population बढ़ रही है. We need to make sure कि हम इनको एक credible platform provide करें जहाँ पर इनके साथ direct consultation हो सके policy recommendations के ऊपर. So Nimra, I would draw your attention to a very important fact कि अगर हम कोई भी हुकूमत कोई policy लेकर आती है without taking the youth on board, without taking the youth in the loop, और उन्हीं के बारे में पॉलिसीज़ लेकर आएगी, उन्हीं के बारे में कवानीन लेकर आएगी बगैर उनकी राय को जाने, तो वो उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे या उनको इम्प्लीमेंट करवाना इतना आसान नहीं होगा अगर उनकी उसके अंदर कंसल्टेशन शामिल ही नहीं होगी. तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि करंटली पॉलिसी रिकमेंडेशंस के अंदर कोई भी किसी किस्म की डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं होती यूथ के साथ.
तो ये जो हमारी 63% to 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, इनकी एक आवाज़ बनने के लिए, in order to carry forward their stance, we need youth leadership. So youth leadership is inevitable. Very recently, I happened to attend the UN Generation Equality Forum, although virtually, that was taking place in Paris. And the fact that was emphasized by all our speakers there was that intergenerationality and intergenerational approach is the only way forward. Because we're almost on the brink of starting the second quarter of the 21st century. Without having the youth in the loop, इसके अंदर हम solid implementable policies नहीं लेकर आ सकेंगे. So that's pretty much my stance in this, that youth leadership is inevitably important at this point. They have to be taken in the loop. और क्योंकि हमारी population का एक significant segment हमारी youth है, तो उनकी representation, उनकी voice, policy और governance forums के ऊपर is very important, is crucial. So we cannot overestimate the importance of youth leadership. Thank you, Hania. Miss Hamda, coming to you. Can you please hear me? Sorry, ma'am, you are still not audible. Sir Najimuddin, same question आपके लिए. क्या reviews हैं आपके इस बारे में? Hello, can you listen? Yeah. Am I audible? Yes, you are. Okay. जी निम्रा, जिस तरह कि हानिया ने रिफ्लेक्ट किया कि दिस इज इंडीड जो है वो दिस इज इंडीड इनएविटेबल, जिस तरह के शी clearly stated that we have more than 60% population which is the youth of youth को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना रिगार्डिंग पॉलिसी, रिगार्डिंग लॉ मेकिंग और रिगार्डिंग एनी यूथ मैटर, इनको यूज करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए यूथ लीडरशिप इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और जिस तरह कि आप Sir, you also have internet issue. Coming to you, Ms. Farooq Awais, with the same question, like we all say that youth is our asset. What is the importance of having this asset in leadership? Right. Economists often refer that the youth bulge of any country can either go to a demographic dividend, or it can, become a time bomb. That depends upon that how productively we are engaging the youth in the activities. So what I believe is that intergenerational policy approach and governance and policy making is something that is the need of the hour. Having said that, why I am emphasizing that this is the need of the hour, I would say rather it is a need than a nice to have intergenerational approach towards policy and governance, because it would be a strengthening and it would be laying the foundation for the future, and it is what would affect our planet, and then ultimately that is going to affect our democracies. It's not just like to put people into the leadership roles, but yes, we have to give them appropriate leadership roles. By that I mean meaningful engagement of the youth. It also requires to think about it and the fundamental show that how we view the youth as just young people as the citizens of tomorrow. Rather, we should focus that they are the equal citizens of today. This is how we can give them opportunities to equally participate in today's world to have a better world tomorrow. Yes, ma'am. Thank you. Thank you for your kind words. Miss Hamda Ali Khan, can you please hear me? Okay, somehow she left. Ma'am, Farooq, coming to you.
like we all say that our there are some problems that are faced by our young leaders, so, which includes that opportunities, self-confidence, there are lot of lack of opportunities. How to tackle with all these problems? Right. So first of all, to connect with the previous question you have asked, I would say that I do agree, and I hope all the panelists sitting here would agree with me that different generations may have different experiences, sensibilities, and expectations. That's a quite natural thing, you know. But we need to build upon these expectations and sensibilities in an harmonious way, I believe. As far as challenges of the youth leadership are concerned, this is a really important question to be answered. The issues that the youth leadership is facing today, they are quite changing and complex. I would say one of the major challenges that the youth leadership is confronting is that the so-called youth engagement and youth inclusion. So I would say that so many times, unfortunately, the young people of the population are given the opportunities to participate just as figureheads or the tokenistic approach towards the youth engagement. It's responsibility of all the decision makers, you know, to avoid antagonism between the cohorts of generation gap and the population groups, because and coming towards another greater issue that is, just striking us, is that in the professional life, the innovative and young ideas from the young minds are not accepted by their senior colleagues. This is why, because they are not ready to share the space with their young colleagues. This is a threat, I would say, existential threat to them. This generation gap that is created by the senior colleagues is a major issue that the youth leadership has to tackle with. Thirdly and lastly, we should not forget about the financial constraints and the resource limitations that the youth leadership is not productively being able to participate. And having said that, I would say the role of agencies and the role of NGOs here comes forward, that how they can help youth in potentially and actively participating by financially supporting them, because young people today, young leaders today, I would say, are in the dire need of allies to make sure that they are being engaged, involved, and understood. That's why it's really important to tackle all these challenges. Thank you, ma'am. Miss Hamda Ali Khan, coming to you with the same question. I'm so sorry, ma'am. We still can't hear you. Hania, coming to you with the same question. Firstly, I would begin by actually concurring with what Ms. Farooq just mentioned, that there is a significant challenge of lack of opportunity and also an antagonism that exists because of the generation gap, which eventually contributes towards lack of opportunities. As Nimra, connecting to your question, that is a big challenge the youth leadership faces. But I would slightly move forward from these goals and try to build on a different factor. So if there are lack of opportunities, the youth needs to create opportunities. Although in the climate of antagonism, this might be difficult, there could be challenges, but I think that opportunities have to be created by the youth if they're not being created by the governance and policy makers, the legislators, the executive. If they're not making opportunities, we have to take the leap forward and we create opportunities for ourselves. So if you're sitting at a table and nobody is giving you a chair, they say take folding chair, right? So you need to make sure that your voice is being heard. And for that, the youth needs to support the youth. So today, if we're sitting together, Ms. Farooq is joining us from Azad Kashmir, Najm has a completely different initiative. The fact that we're all coming together is in itself a very positive sign that if opportunities are not being given to us, let's create opportunities. Let's support each other and actually build on our own selves. You talked about a second very major issue, that is lack of self-confidence. That also
is a hindrance when it comes to people, actually our young leaders harnessing their potential or recognizing their potential to the full extent, because of many hindrances like personality development. For that, we need mentors. And that mentorship has to come from academic structures, has to come from academic institutions. So although the problems are there are challenges, but it's not that they are without solutions. They are under resourced, there are financial issues, but they're not such big issues that they cannot be solved. Although it requires effort, it requires a lot of cooperation, but I am an eternal optimist and I do see that there is hope. That would pretty much be my stance. Yes, there is still hope. Najimuddin, coming to you with the same question. जी देखिए, जिस तरह निम्रा ने बात की है ना, और जिस तरह मिस हानिया ने इसको बड़ा क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दिया। तो देखें, विदाउट इनकी बात को ऐड करते हुए, एज शी सेड कि दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, वी आर, जो यूथ लीडर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, दे डू हैव चैलेंजेस फॉर देम, ठीक है, और वो चैलेंज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। दिस कुड आल्सो बी अ चैलेंज कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, you don't have any sport material, so this is the challenge. So मेरा ख्याल है जो youth leaders हैं, even they don't have sport, we are like running water, हम अपनी जगह खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है। we just जो youth जो है, जो leaders जो हैं, they do know how to overcome those challenges, लेकिन अगर as well as हमारे पास जिस तरह सपोर्ट होगी, वो सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमारे साथ होगी, हम इसको मजीद अच्छे से कम कर सकेंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ द वर्क होगी, दैट वुड बी बियॉन्ड आवर रीच। सो असल में ये बात है कि जिस तरह देखें, हम लोग विदाउट इवन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के बगैर जिस तरह हम मिलकर काम कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द चेंज, लेकिन वो बहुत स्लो पेस के ऊपर होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग आवर ओन रिसोर्सेज, वी आर यूजिंग आवर ओन एनर्जी। तो ये बात है कि यूथ लीडर जो हैं वो अपनी जगह बनाना जानते हैं, लेकिन अगर वी हैव सपोर्ट, वी हैव मेंटर्स, वी हैव रिसोर्सेज, वी कुड डू दिस एज सून एज पॉसिबल। और ये जो है एज अ नेशन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल पैदा कर सकेगी, और इसलिए जो है यूथ लीडर्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे डू हैव दी चैलेंजेस ऑन देयर रोल, बट दे डू नो हाउ टू ओवरकम दोस challenges. Thank you, sir. Miss Hamda Ali Khan, can you please hear me? Sorry, ma'am, you still have connectivity issues. अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाने पड़ते हैं। मिस फरूक अवैस, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लाइक कामयाब नाम का इनिशिएटिव लिया गया था, यूथ नेशनल काउंसिल जिसके अंडर आती है और आप उसकी मेंबर रह चुकी हैं, इसके बारे में आप बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, किस हद तक ये इफेक्टिव हो सकते हैं यूथ के लिए? थैंक यू निम्रा। इफ यू अलो मी, पहले में जो मेरे फॉर्मर पैनलिस्ट ने बात की, आई वुड जस्ट लाइक टू अग्री विद देम। आई वुड लाइक टू एंडोर्स द फैक्ट कि अगर जैसे मिस हानिया ने बात की, सर ने बात की, हम if we are not given the opportunities, we have to create them, right? So individually, every one of us is doing best in their capacities, with their expertise. The need is to just synergize these efforts and just imagine what these synergized effort would globally bring a good name and fame to Pakistan. I'm sure, I'm pretty sure. So this is the thing. One more thing about it is that हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी एक लीडर कह लें, किसी एक इंडिविजुअल की तारीफ है तो शायद वो मेरे लिए शायद मेरा लैक है, मेरी उसमें कुछ शायद मेरी कोताही आ रही है या उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा ना, तो दैट्स समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन इट। किसी एक की तारीफ आपके लिए भी तारीफ है, जस्ट क्लैप फॉर दोज हु आर वर्किंग गुड एंड देन अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग गुड। और सब लोग अगर मिलके एक एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो हम सबका इंडिविजुअल गोल है, दैट वुड अल्टीमेटली अचीव द गोल ऑफ पाकिस्तान टू ब्रिंग अ गुड नेम टू इट। Coming towards your question,
I would say a good youth policy must include and involve the youth in decisions that are affecting them. Stakeholders should be mindful about that. Stakeholders must be mindful of the fact that the youth engagement should be meaningful, multifaceted, gender inclusive, age inclusive, I would say monitored and accountable strategies for youth are the need of the hour for Pakistan. Because young people really know that and they really understand when they are being heard, when they are given the positions that really mean and they are meaningfully engaged in public affairs, right? Putting National Youth Council in perspective, I would like to answer your question in three dimensions. I would share three dimensions of this initiative with you. First, platforms like a National Youth Council, they act as a bridge to connect the youth of the nation with the stakeholders or the policy makers. They bring the youth and the stakeholders on the same table, where the youth has opportunity not just to intervene or just to put on in their interventions on policy matters, but yes, they have the right and they have the choice to raise their concerns over there. Second, I would say working closely with government bodies. This is something that brings a new thing in those people who are working with government sector, because it gives them an opportunity to better understand what constraints are refraining the government to lead or to conduct a certain, our aspiration maybe of a certain, project. But why government is not doing that? What are the constraints that government is facing? This is something that brings a new vintage, and they are on a better vintage with that why our government is not going to do that, or what are the challenges that they are facing. And that ultimately builds constructive communication. Thirdly, the individuals who are being selected on platforms like National Youth Council, it gives them a sense of accomplishment and acknowledgement. The selection itself is something that is giving them an opportunity to express and to be a face of the youth of the Pakistan. They get acknowledged that their work, their community services are being acknowledged by the government. So this is, I think, what brings effectiveness to such initiatives like Kamyab Jawan and ultimately the flagship program, National Youth Council. To share with you, the very first cohort of National Youth Council was very diverse. Likewise, the second cohort that has started working is tremendously doing good. We are working with them as alumni members. So I hope it's something towards progressive Pakistan. Thank you, Anna. Hania Rifat, coming to you with the same question. What are your reviews? Right. So I would begin exactly from where Farooq left, that eventually the aim is to build a progressive Pakistan, right? So for that, we need to engage the youth, and there has to be constructive engagement of the youth with the policymakers. But again, the effectiveness and the efficiency and the impact of initiatives like the NYCP and Kamyab Jawan program have frequently been thrown shade on, they've frequently been undermined, and the exact effectiveness of these programs and the impact it had cannot be quantized. There's no barometer to measure the success of these programs. So apart from these programs at the national level, we need to have mobilization of the youth at grassroots level. And by mobilization, I tend to suggest activism. And activism is no way synonymous to vigilantism or taking the law in your hand. Activism is social activism that Hamda Ali Khan and her organization and multiple other organizations have been engaged with. It is academic activism that I advocate for, that Najm works for, and that is making sure that different academic researches are being carried out, academic initiatives are being taken by the youth in order to spread awareness. So we need to have, at the grassroots level, youth involvement. At the national level, we have initiatives like NYCP, we have the Kamyab Jawan program, which in itself is a very positive step, the mere fact that they're being made and they're being taken seriously. But the impact and effectiveness of these have not been quantized, कि ये हमारे माशरे के अंदर कितने इफेक्टिव रहे हैं, इसका भी हमारे पास कोई असेसमेंट नहीं है. लेकिन हमारे पास ये ज़रूरत ज़रूर है कि हम
ग्रास रूट लेवल के ऊपर जैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इनको सपोर्ट करें, इनके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह YGA है, जिस तरह गेम्स ऑफ लॉ है, जिस तरह अलग से इंसानियत है, ये एक तरह से यूथ इन्वॉल्वमेंट को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे लेकर चले। आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन दैट वी वर्कड वेरी हार्ड ताकि हम पॉलिसी के ऊपर यूथ को लेके आएँ, उनको एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म दें, उनको स्ट्रीमलाइन करें उनके टैलेंट्स को, और आई एम श्योर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कर रहे हैं। तो मैं आपका सवाल का अगर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट में जवाब दूं तो वो यही होगा कि इन जो इनिशिएटिव्स हैं ऑफ कोर्स दे डिजर्व आवर अप्रिसिएशन, दे आर अ पॉजिटिव स्टेप, लेकिन ये कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, इसका भी हमें नहीं पता। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो हमारी, अब देखें आपको अगर मैं एक फिगर यहीं पे कोट करूं तो एक सर्वे के अंदर 100 लोगों को, 100 जो हमारे यूथ के पॉपुलेशन है उसमें से 29 सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, उन 29 में से सिर्फ 7 खातन हैं। तो हमारे पास बहुत मेगा इश्यूज हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिनको एड्रेस करने की अशद ज़रूरत है। तो उसके लिए जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूथ, हमें उनको सपोर्ट करना है और उनके साथ कोलैबोरेट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स यूथ सपोर्टिंग द यूथ एंड दैट्स अल्टीमेटली माय कन्वर्सेशन बॉइल्स डाउन टू दिस फैक्ट। थैंक यू हानिया। मिस हमदा अली खान ने हमें ज्वाइन किया दोबारा से। मिस आप सुन सकती हैं हमें? सॉरी मिस। मैम आपका स्टिल इंटरनेट का इशू है। हम आगे बढ़ते हैं सर नजमुद्दीन की तरफ। सर क्या रिव्यूज हैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में? क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसे जी देखें मैं हानिया की बात को सेकंड करता हूं कि बिल्कुल जो कामयाब जवान प्रोग्राम है या इंक्लूडिंग जो नेशनल यूथ काउंसिल जो है वो बनाई गई है गवर्नमेंट की जानब से, और जिस तरह के इस गवर्नमेंट का यूथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मोटिव से और बेसिक जो इनका नारा भी यही था कि यूथ को आगे लाया जाएगा। और जिस तरह हानिया ने कहा कि ठीक है, कामयाब जवान प्रोग्राम इज़ डूइंग गुड, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जिस तरह के दूसरे यूथ लीडरशिप के अदारे मौजूद हैं, जिस तरह के YGA मौजूद है या इसी तरह के बहुत से जो यूथ लीडर्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं सालों से जो है काम कर रहे हैं, तो दे मस्ट हैव टू वर्क टुगेदर विद देम। ठीक है, इसी से जो है इन्हीं यूथ लीडर्स को जो है वो एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, एक कोलैबोरेशंस भी होंगी, और इसी की मदद से गवर्नमेंट को जो है वो फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर ऑलरेडी काम मौजूद कर रहे हैं। दे डू ऑलरेडी हैव टीम, दे डू ऑलरेडी हैव पॉलिसी मेकर, दे डू ऑलरेडी हैव लेजिस्लेटर्स विद देम। तो इनकी मदद के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने जो प्रोग्राम्स को है वो मज़ीद मजबूत भी कर सकती है, और इन्हीं की मदद से बाकी यूथ लीडर्स को भी जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। थैंक यू सर। मिस हमदा अली खान आप बोलिएगा। मैम क्या आप हमें सुन सकती हैं? Nimra, if you could speak a bit loudly, I think there's some issue, we can't hear you properly. Okay. Now you can hear me? Yeah. हम अपनी इस डिसीजन को कंक्लूजन साहब कुछ डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और हम आते हैं मिस फ़रूख अवैस साहब की जानिब। क्या आपके क्या व्यूज़ हैं और क्या रिकमेंडेशन है कि हमें किस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है यूथ को इनकरेज करने के लिए, और किस तरह के इनिशिएटिव हमें और लेने चाहिए कि हम यूथ को एज ए लीडर ला सकें? राइट सबसे पहले तो जो अभी बात हुई उस पर मैं ये कहूँगी कि जो नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स हैं, दे आर वन ऑफ देम, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, और जो काम हम सब इंडिविजुअली ही कर रहे हैं वही हम में से ही कुछ लोग जाके नेशनल यूथ काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। एज it has been said by both the panelists, I would agree to them. The प्लेटफॉर्म्स लाइक YGA और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे आप सब जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे, आई बिलोंग टू NAP, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन, तो हम सब इंडिविजुअली अच्छा काम अपने सतह पे कर रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की
तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम सब इन एफर्ट्स को सिनर्जाइज करें, आपस में कोलैबोरेशंस बढ़ाएं ताकि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। If I conclude this talk, सबसे पहले तो I would like to thank you and the Youth General Assembly. I wish this event to be a success. I believe every day is a chance to build a better world for tomorrow. In this whole process, the main lead or the main point I would say is the youth, because youth of Pakistan, to be precise, possesses energies. They have positivity. They want to do something. The courage, I would say, it outshines when you come towards Pakistan. The energy and the willingness to do something, it outshines in the global status. So we just need to give opportunities and platforms like this to continue the progressive and productive youth empowerment. Again, from where I began, I would just reiterate the fact it's really important to have meaningful engagement of the youth. It should be inclusive of the young voices, their competencies to steer the society in the right direction. That fits for all, I would say, and for all the leaders, the worthy panelists, and you and everybody who is listening to us. I would say, remember, we are the leaders today who are ready for tomorrow. I thank you with this, and I wish everybody a very happy International Youth Day. मिस हमदा अली खान, आपकी तरफ आते हैं हम। सॉरी मैम, स्टिल हम आपको नहीं सुन पा रहे। हानी, आपकी तरफ आते हैं। क्या रिव्यूज हैं आपके, क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगी आप? निम्रा भी है। हेलो, Hania, can you hear me? Yes, you are audible. Hi Nimra, can you Hania, hear क्या me? reviews? Yes, Ji, now I ji. can hear you. So I think I would conclude by firstly thanking everyone for being on this panel today and extending my most sincere support from the platform of YGA Sport, and actually at the same time I would commend them for the initiatives they've taken. I wish them the very best luck for their future and their future contributions towards society. One very important aspect that I would like to indicate towards the very end is that जो हम फारूक ने शुरू में बात की कि हमारे पास एक यूथ का एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अब ये एक टू साइडेड स्टोरी हो सकती है, either it can become a time bomb or we can utilize and harness the talent of our youth, the potential of our youth, and actually pave the way towards a progressive Pakistan. But what अगर हमने इसको ना constructively utilize किया इस टाइम के ऊपर, तो the results could be long term, they could be disastrous, and they could not be in favor of Pakistan. क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हमारी जो मैंने आपको एक फिगर कोट किया था कि 2700 में से एक सर्वे को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एम्प्लॉयड हैं, बाकी अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें से 57 कोई जॉब सीख नहीं कर रहे। अगर कोई जॉब नहीं ले रहा या हमारी यूथ इन्वॉल्व नहीं हो रही,
तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू because unemployment leads towards violence leads towards extremism. So हमारी society के अंदर law and order situation exacerbate करेगी, हमारी economic situation के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात होंगे. तो it's so important that we all, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें सुनेंगे once we post recording, ज़रूरी है कि आप चाहे जहाँ भी हैं, आप अपने हिस्से का काम ज़रूर करें. So you need to have this in mind, being the young people of today, that you have to give back to society in whatever individual capacity. If you're working from a platform, good enough. Even if you're not working from a platform, just make sure that you're contributing effectively towards society. And this would pretty much be my concluding remark. शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था हम अपने हिस्से की शमा जलाते जाते. कमिंग टू यू नजमुद्दीन. जी देखें, जिस तरह के मिस फ़रूख ने भी बात की है और कि वी आर द लीडर्स, हमें इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है. यू डू फेस इश्यूज़ एंड चैलेंजेस. और जिस तरह ये एक मैं क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगा कि जिस तरह ये एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया है कि देयर इज़ अ मेजर इशू ऑफ लेग पुलिंग इवन योर ऑन पेयर्स और योर ऑन फेलोज. तो देखें, आपको ये चीज़ जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट योर विजन, दिस इज़ अबाउट योर प्रिंसिपल्स और दिस इज़ अबाउट योर नेशन. ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने कभी घबराना नहीं है बिल्कुल. और जो है कोई भी इश्यूज़ जो हों या कोई भी चैलेंजेस जो हैं वो आप ओवरकम कर सकते हैं. और इसी के साथ साथ जो है मैं वाईजे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अमेजिंग डिस्कशन जो है इसके ऊपर क्रिएट की और जो वर्ल्ड यूथ डे के हवाले से. और मेरा मैसेज भी यही है कि यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क और इंशाल्लाह दिस विल ऑल पे आउट वन डे. थैंक यू सो मच. मैम फ़रूख, आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा जो लोग आपसे पूछ रहे हैं. राइट अभी क्वेश्चन पॉप अप कर रहा था कि लेग पुलिंग बहुत है. बड़ी अच्छी बात की नजम साहब ने. मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी बिकॉज एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है. देयर इज़ अ लॉट टू डू बट येस वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट. इसके लिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप इवन इफ यू आर नॉट having a platform, you just have a circle of friends, aap wahan se start kar sakte hain. Just try to make this very common that it's good to applaud for those who are succeeding in their lives. It's not like that if they are successful you are being unsuccessful. This is something that we really need, because again I would say one of the major challenges that youth leaders would face is this. Coming towards the second phase of this statement, I would say लीडर्स वही होते हैं जो मुश्किल हालात में पैदा होते हैं और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते. इसलिए आप कोशिश करें कि अपने विजन और अपने मिशन पे बिल्कुल लगे रहें, अपनी सारी एनर्जीज और अपनी सारी कुव्वत अपने जो आपका मिशन है उस पे लगा दें, बजाय इसके कि आप किसी नेगेटिव कमेंट या आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उन चीजों को लेके बैठ जाए. थैंक यू मैम. हानिया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, लेग पुलिंग के बारे में? मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन पहले भी देख रही थी, सो आई वुड एड्रेस बोथ ऑफ देम. वन वाज अबाउट कि गवर्नमेंट तो हमारी एलीट होती है, इट्स द एलीट क्लास दैट इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड दे नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द ग्रास रूट इश्यूज ऑफ द यूथ. तो मैं इन दोनों सवालों का जवाब दूंगी. फर्स्टली आई वुड मूव टुवर्ड्स लेग पुलिंग. बिल्कुल, वी अप्रिशिएट एंड वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर इज अ वेरी रैम्पेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिंग ईच अदर डाउन अगर कोई आगे जा रहा हो. तो इसके अंदर तो थोड़ी हमें खुद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगरचे दूसरों को कहते हैं कि अच्छा ये हमें लेग पुल करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. हमें दूसरों को पीछे करने की थोड़ी एक इनहेरेंट कॉम्पिटिटिव नेचर है हमारा. या पता नहीं क्या वजह है कि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि दे ट्राई टू पुल ईच अदर डाउन. एक तो मॉरली इस चीज़ को हमें कंडेम करने की ज़रूरत है. सेकेंडली, जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा कि इनको इससे डिसअपॉइंट होने की, डिस्करेज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंड थर्डली, एज आई मैंशनड ऑल्सो, दैट इफ समबडी इज टेकिंग अवे एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू, यू हैव द पोटेंशियल, जस्ट रिकग्नाइज द पोटेंशियल यू हैव टू क्रिएट अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ. तो अपने ऊपर जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले पहचानें और फिर अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें अपने और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए. सेकेंडली, व्हेन देयर वाज समथिंग कि ये मेरा भी थोड़ा स्टांस होता था एट सम पॉइंट इन लाइफ कि
सिर्फ कुछ लोग ही गवर्नमेंट में जाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं, एंड यूजुअली उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका कोई बैकग्राउंड, इसके अंदर जो फैमिली बैकग्राउंड वगैरह की ही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितने मुल्क में आगे जाएंगे और आपके कितने आपके पास पावर होगा टू मेक डिसीजंस. सो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट नेसेसरली नीड टू बी डिस्करेज्ड अबाउट. एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर पैदा करें कि आपके अंदर पोटेंशियल है टू ब्रिंग अबाउट चेंज. सो जस्ट कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सेसिबल हैं तो उनको ज्वाइन करें और उनके थ्रू अपने स्टांस को, नैरेटिव को आगे पुश फॉरवर्ड करें. बहुत शुक्रिया हानिया. एट द एंड मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. सर नजमुद्दीन, मिस हमदा अली खान साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, मिस फ़ारूक अवैस सॉरी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. और बहुत एक फ्रूटफुल डिस्कशन थी. होप सो नेक्स्ट सेशन में फिर कभी आपको ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you very much for having me. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू निम्रा, थैंक यू.